message box रे the restriction of the all learners are informed. Register their roll number and name in message box. So good evening to all learners. Good evening to all learners. Good evening, sir. Good evening. Let us listen today. That why society are diversified. Today we will go to discuss on block 4 of your subject. Contents social legislation on children, social legislation on women, social legislation on scheduled caste and scheduled tribes, social legislation on disadvantages, and other social legislations. Block 4 contains all these items. So you should keep it in mind and create awareness yourself about the block 4, the subject matter, contents. So let us listen why there is social diversity and the society as problems faces different problems during different time periods. Where there is inevitable for social legislation, we should, all the citizens should try to change their behavior and attitude as for the nations. The sacrifice and the dedication should be held from the side of all the citizens. We should maintain a good, cordial social behavior, and by which our nation will become a welfare nation among all the countries in the world. So that is why the society contains like two types, two categories of people. Listen carefully, all the learners. The society really as traits or group of people having two categories. Introvert categories. So introvert and extrovert categories or personalities of people are there in the society. So we should follow the behavior and attitude of the introvert and extrovert. Introvert means that can we say in Odia, जो माने inner concept उपरे अंतर निहित बा जो माने confined है कि थांती. Extrovert means जो माने open minded. So there are two important personalities of people or group of people in the society. Listen carefully. The psychologist has thought the ideas of introvert categories of or character of people like introvert is one of the two basic orientation of people have. Persons with introvert orientations are primarily oriented to the subjective world. Introvert categories of people are belongs to subjective world. They are not open-minded. So that is why such people look inward and experience and process their thoughts and ideas within themselves. तांको निज भितरे जो माने सब कन्फाइंड ही थांती आबद्ध ही थांती. There is no social contact. सामाजिक संपर्क वा रिलेशन is breakdown.
in such categories of personalities of people. Samajika relations, friendship is breakdown in such categories of people, like introvert categories of people. So they also avoid social contacts and initiating interaction with other group of mates withdrawn. They are withdrawn the relationship or contact with other categories of people in the society. Hence, these categories of people, they are not belongs to open-minded. They are confined in nature and breakdown of their social contacts. And another category of people like extrovert category, just opposite of introvert categories of personalities of people. So extroverts, simply speaking, extroverts are just contrary to introverts. Extroverts are friendly. Extrovert categories of people are friendly, having numbers of social contacts, and lively, friendly, gregarious, aggressive, and expressing their feelings and ideas openly. ये जो extrovert categories of character of people लोक माने सब openly से माने जहाँ कहवा कथा कह दियंती से माने आउ किछि मन भितरे रखि न थांती their personal attitude. So such different types or categories of people are available in our society, and so that is why we should maintain, the society should accept both the categories of people. We cannot ignore or avoid it. Such introvert and extrovert character of people or personalities of people. So that is why their mental attitude, their body language also differ. Introvert character and extrovert character. Hence, society behave accordingly as per the introvert personality and extrovert personality. जार जो टाइप रो पर्सनालिटी अच्छी समाज ताकू सेही भली व्यवहार देखाई थाए. समाज कहले माई सेल्फ इज वन पर्सनालिटी एंड अदर पीपल आर बिलोंग्स टू दी सोशल सोसाइटी. सो मो जो टाइप रो सोसाइटी रे बिहेवियर करबी बा बिहेव शो करबी मोर पर्सनालिटी शो करबी, दी सोसाइटी विल अकॉर्डिंगली बिहेव टू मी. सो इफ आई विल मेंटेन a numbers of contact with other people, so that other people automatically become friendship with me. So that is why society depends on both the and accept both the categories of people. Accordingly, there are legislation also as maintained by the country or the government of different countries in the world. जो टाइप रो लोक सब जो देश रे थांती सेही टाइप रो लेजिस्लेशन मध्य लिंक करा जाय थाय बा तांकर अमेंडमेंट बा संविधान रे सेही टाइप रो जेबोली भारत रे हमर बहु जाति धर्म वर्ण संप्रदाय रो लोक माने अछंती. Accordingly, our constitution is framed and amendment also as undertaken in different time periods, because the social behavior, personality of the people, is habit of the people are changing day by day. We are sometimes following the Western cultures, and there is a rape and a murder and antisocial activities, ragging, etc. appears in the society. So government also amended at intervals to our constitutions. So that is why the country depends, the welfare of the country depends on the personality and attitude and the learning and behavior, the country's descent, etc. depends on its citizens. So that is why there are numbers of legislation held during different time periods, because the society, personality, behavior of the people changes. Hence, in this context, the social legislation on children, पिला मानक पई कोन सब सोशल लेजिस्लेशन काहे कि पिला मानक को गुरुत्व दिया जाउची, because they are the future generation to build this country and grow the country economically, socially, politically, and in every respect. They are the capital, human capital resources for our country, for the future generations. So sustainability is very important in this context. So that is why social behavior
for these children, how maintained by the government when unequal distribution of wealth, significance of social legislation. कहीं कि हमें social legislation हमें दरकार करिबा गोटे देश पई कोन पई एवं कहीं कि पर्सनालिटी लोक मानक बिहेवियर एटीट्यूड कहीं कि चेंज होउची एवं समाज रे कोन प्रभाव पडुची ये सबु हमर एवं जदि खराब प्रभाव पड़िला हमर कोन लेजिस्लेशन देश पई आवश्यक पडुथाय सेति पई सरकार विभिन्न समय विभिन्न प्रकार अमेंडमेंट संविधान को परिवर्तन करिथांती when unequal distribution of wealth exists in the society or when social justice is denied to certain sections people, laws are enacted by the state and by the center. जेतବେଳେ social justice hamper हुए सामाजिक न्याय व्याघात सृष्टि होता है सेतବେଳେ हमको आईन को परिवर्तन करबा पई पड़ी थाए लोक मानकर किछि इंट्रोवर्ट कैरेक्टर हो एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर पीपल हो बा अन्य चिल्ड्रेन होंतु समस्त को हमें समान दृष्टि कारण आम देश होची गोटे इक्वल इक्वालिटी इन एवरी रेस्पेक्ट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड देयर शुड नॉट बी एनी गैप wealth and riches gap between our income wealth disparities should not be prevail in our country आय संपद रे बड़ धरणर गोटे पार्थक्य रहिबा उचित नुहे देश रे लोक मानक मध्य रे समस्तंकर समान अधिकार अछि समान न्याय अछि समस्त आईन आगरे समान सेति पई कुआ जायछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉयर्स पैराडाइज वकील मानकर भूस्वर्ग बोली कुआ जायछि सेति पई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कारण काहे कि भूस्वर्ग कुआ जायछि ना जेते आईनी प्रणयन हबो कोर्ट कचहरी एवं वकील मानक द्वारा सब संविधान को बेस करिकरी सारा देश रा आईनीटा कार्यकारी हेइथाय हम भारत रे संविधान ऊर्ध्वर किछ केही ना so that is why social legislation therefore India bears to remove inequalities जदि देश रे inequalities अछि how to remove the inequalities and benefiting the whole community rather than few individuals. It adjusts, supplement and time and replace the existing laws. जो जहाँ existing laws सब अच्छी ताकू हमको विभिन्न समय रे परिवर्तन करबा पे पड़ी था. So what are the importance or significance of the social legislation? It comes to the it comes to help of the weak and oppressed and disadvantaged sections of the society. Those are legislation कौन पाई दरकार जो मान oppressed, depressed बा weaker sections अछंती दुर्बल श्रेणी रो लोक बा गोष्ठी अछंती सेमानक पाई सुस्थ सबल बा दारिद्र्य रो सीमा रेखा ऊर्ध्व को किभଳି नबा देश रे गोटा समान अर्थनैतिक मानदंड प्रिवाइल करिवो सेते बेले हमें गोटे देशर गोटे मंगलकारी राष्ट्र भाव में ताकू ट्रेट करिबा देश को गोटे समाज मंगल राष्ट्र बोली हम ताकू कहि परिबा एवं हमर ड्रीम ऑफ आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट आईबी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर चतुर्थ स्तंभ जा कोछि भारत गोटे राष्ट्र निर्देश भଳି नियम अनुसार भारत होछि गोटे मंगल जनमंगल राष्ट्र बा इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री सेते बेले जाई भारत होई परिबो गोटे समाज मंगल राष्ट्र बोली. So that is why it always attempts to remove exploitation, शोषण एवं and bringing about social, economic and political justice. Justice must be prevail in every respect. So to provide for order, regulation of social relationship, to provide for the welfare and security of all individual of social units, particularly child and women, should give in importance because male dominant society must be ignored. So there must be equal trade, equal rights of men and women, and social legislation relating to children. What are the social legislation relating to children as exist in our country? So social relations as or legislation, all of us agree that children are the most important for the society.
they represent the future of the country, and therefore their development and treatment has occupied the place of priority. सेमानंकर प्लेस को अग्राधिकार भित्तिरे हमकु फोकस करिबा पई पड़िबो. So laws has therefore tried to put to rest these forms exploitation and enacting suitable legislation. आमे exploitation रक्षा करिबा पई हेले suitable legislation we should enact in our country for the children. So however, for our purpose we will discuss some of the important points for the legislation relating to children. So point 1, child marriage. जे मान नोट करिया कथा नोट करो, छोटा छोटा पॉइंट गुडा नोट कर नहीं जाओ. So the child marriage restraint act of the child marriage restraint act, child marriage prohibition act जोटा हमर अछि पिला मानकर बाल्य विवाह को उच्छेद करिबा. So 2 नंबर रहउची the child labor prohibition and regulation act 1986. जो बाल श्रमिक जो मान को जाउची हमर चाइल्ड लेबर जो माने मैच्योर हेना थांती, जो माने देशर भविष्यत नागरिक से मान को जदि हम शिशु श्रमिक भाव रे घरे बाहर सब आड़े खटेबा, होटल मोटेल ढाबा गृह कर्म रे ताकु से मान को जदि नै करी नियुक्ति दबा कोन हबो, देश आगे पारिबो, गोटे देश डिप्रेस्ड बा डाउनवर्ड हे जिवो. सो दैट इज व्हाई चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड दैट रेगुलेशन एक्ट 1986 रे सेति पय सरकार संविधान रो परिवर्तन करिथिले. थर्ड होची जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2001. जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2001. जुवेनाइल जस्टिस होची जो मानकर शिशु बा बाल अपराधी जो मान सब थांती, छोट पिला माने अनेक समय क्राइम करी थांती मध्य, विभिन्न प्रकार चोरी डकायत लुंठन एवं हत्या रे मध्य बेले बेले से मानकर अगोचर रे से माने पसी जाई थांती. तेणु सेति पई सरकार से मानक पई स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट मध्य स्थापन करी छंती. बाल अपराधी मानकू जने अपराधी सहित समकक्ष करा जाई पारिबो नाही, जेहेतु तांकर से माने समाज रे बा देश रे नागरिक भाव रे परिगणित हेई नांती, कोनोसी भूल वसत से माने गोटे एंटी सोशल एक्टिविटी रे इन्वॉल्व होई जेचंती. तेणु सेति पई स्वतंत्र जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट अछि तांग पई प्रोटेक्शन एंड केयर चिल्ड्रन एक्ट 2001 रो. हिंदू नेक्स्ट होची हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. हिंदू मानक पई अछि अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. सो एभली कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अछि मध्य a close look at the preamble will make it clear that the main purpose of the constitution is to secure justice, liberty, equality, fraternity for all its citizens including the citizens. So ए सब justice, liberty, equality and fraternity ये समस्त का पाई मेंटेन हवा दरकार, ताहले हम देश समान व्यवस्था रे सोशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ग्रो करि पारिबो. So article again we focus on our constitution. Article 24 provides जोड़ा important item गुडा को नोट करने नहीं जाओ पिला माने immediately. आर्टिकल अनेक न्याय बा लॉ जस्टिस बाबर जानि परिबो, देश रे हमको सम्यक आईन ऊपर धारणा थिबा दरकार. संविधान आर्टिकल सब हमें राइट टू इक्वालिटी बा राइट्स ड्यूटीज एगडा सब जानिबा दरकार. सो आर्टिकल 24 provides that no child below the age of 14 years should be employed to work in any factory or mines or in any hazardous employment. कोनोसी विपज्जनक अवस्था रे हमर पिला माननकू 14 वर्ष तळरु आमे सेमानकू काम रे नियुक्ति देई परिबा नाही. ताले सेमान होचंदी बाल श्रमिक रे बोली गणा हेबे.
से जो माने सेमान को नहीं कर्म रे नियुक्ति देथिबे यह गुरुतर अपराध सेमान पनिशमेंट अच्छी इम्प्रिजनमेंट अच्छी एवं आर्थिक दंड मध्य अच्छी सरकार के तरफ सो दैट इज व्हाई द चाइल्ड restraint acts and those are employed in different mines and factory the people will automatically punish. Next होची the child marriage restraint act पिला मानकर जो बाल्य विवाह ता पई मध्य सरकार आईन मध्य प्रणयन करिसंती. It was reintroduced and passed on 1st October 1978 about child marriage restraint act. हला एटा मध्य these items also included in your topic. So that is why you should focus on this aspect of the subject. Hence, the male at present should have completed the age of 21 years. While female should have completed 18 years. Male must completed 21 years and female must completed 18 years are eligible to marry. Otherwise, they are treated as the child marriage, included in child marriage. So that is punishment. जो माने child marriage करी थांती समान पाई मध्य punishment अछि हम संविधान द्वारा कौन सेडा the punishment are different for different categories of offenders. A male above 18 years and but below 21 years if found guilty यदि दोषी हला of child marriage can be subjected to simple imprisonment of 15 days. 15 दिन आगे से हरण घड़ा रे पसी जीवो आगे ओडा भितर जेल ले आगे 15 दिन से रहिबो. जदि 21 वर्ष गोटे मेल टाई एवं फीमेल जदि 18 वर्ष तळ जदि मैरिज करले आगे 15 दिन से जाई चौकी पेसिबो जेल ले रहया में पड़िबो एवं फाइन ₹1000 टका फाइन दबो बाल्य विवाह कले. आम सीना आईन को कहीं मानु नाहंती बा लुचि छपिकी आईन को आम भायोलेसन करूचंती बट इट इज वेरी वन ऑफ द सीन फॉर आवर कंट्री आवर कॉन्स्टिट्यूशन यह गोटे पाप भाव में आम ग्रहण करवा. सो सेकंड होची ए मेल एबव 21 इयर्स फाउंड गिल्टी ऑफ चाइल्ड मैरिज कैन बी सब्जेक्टेड टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 months and fine also. So third होची a parent or an guardian who remains silent से देखुचंती जे पिला मैरिज करिया पे जाउची यदि साइलेंट हेले ताले गार्डियन विल बी आल्सो पनिश्ड. सो गार्डियन मध्य पनिशमेंट पाइबो ताकू से केही ब्रेक करि परिबे नै. जो करंट मझे मझे पळै जाउची बड ओडुआ होची करंट पळै जायछला पुणी so my picture black poli astala. So child labor prohibition act and regulation act 1986 child labor prohibition जो बाल श्रमिक में जो मान कहउछन जो माने घर घर काम रे नियुक्ति पाउछंती होटल मोटेल ढाबा एवं दुकान बाजार रे जो मान नियुक्ति पाउछंती समान पई सब जो माने रखिथिबे समान पई सब कोन सब पनिशमेंट अछि. It regulates the conditions of work of children in employment where they are prohibited from working. जो माने पिला माने विभिन्न क्षेत्र रे काम करूचंती समान के पई एम्प्लॉयमेंट दउचंती समान को प्रोहिबिशन करबा उचित समान को तारे नियुक्ति करबा उचित नुहे. विभिन्न कर्म संस्थान मान करे प्रोसीजर लेज डाउन for inclusion of other such occupation under banned category जेते गुडी को बैन पिला मानक पई सब अछि से मानको सेठारे नियुक्ति दबा उचित नुहे. Prescribed penalties to be imposed on those who violates the norms or the act 1986 जो माने 1986 मसिया एक्ट चाइल्ड लेबर एक्ट जो भायोलेशन करिवे so they will be automatically punished. And the safe occupation and process have been specifically stated. पिला माने जदि काम करिवे केते गुडे सेफ कंडीशन रे केते गुडे सेफ सेति में हमर संविधान आईन मध्य रखिछि. एनी ऑक्युपेशन कनेक्टेड पिला माने स्पेशली सेफ एरिया मान करे काम करबा उचित.
So Abhimanyu mute karo. Hello. So transport of passengers, goods or mails by railway. ए क्षेत्र रे पिला मानकु नियुक्ति दिया जाय परिबो नाही. Next होची cylinder picking, clearing of an ash pit or building operation in the railway premises. ए क्षेत्र रे पिला मानकु नियुक्ति दबा उचित नहे. Work relating to the construction of a railway station with any other work where such work is done. So the children should not be allowed to work. A port authority within the limits of any airport. Airport area भितरे हेमानकु पिला मानकु allow करिबा उचित नहे. So similarly among the process the following have been included. केते गुडियो items मध्य आउरी include करा रे बीडी मेकिंग जोडा का टबाको बीडी जो मान सब तयारी करछन बीडी मेकिंग क्षेत्र कांता जो धुआं एटा पिला मानक पय भारी क्षतिकारक बा बीडी रो जो दुर्गंध थाए भारी क्षतिकारक. सो कार्पेट वीविंग कार्पेट चादर गालीचा एगडा सब तार डस्ट गडा पिलांक नाकरे जाईगिरी ब्रोंकाइटिस बाहर करिवो रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर दबो निश्वास प्रश्वास नबारे डस्ट सब बाहर कार्पेट वीविंग. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग बैगिंग ऑफ सीमेंट डस्ट जो बैगिंग करा जाउची सेठी ता डस्ट गडा पिलांक रेस्पिरेटरी सिस्टम रे जाई विभिन्न प्रकार रोग सब बाहर थाए. सो सेही बडी क्लॉथ प्रिंटिंग मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस एक्सप्लोसिव एंड फायर वर्क्स ए सब क्षेत्र मध्ये पिला मानकु नियुक्ति देबा उचित नय. मिका कटिंग मिका होची गोटा प्रकार धातु से क्षेत्र डस्ट बाहर थाए. तापरे सो मैन्युफैक्चरिंग जोटी साबुन इत्यादि डिटर्जेंट तयारी होची सेठी मध्ये पिला मानकु अलाउ करबा कथा नय. वूल क्लीनिंग से सब क्षेत्र मध्ये पिला मानकु अलाउ करबा उचित नय. सो ए केता प्रति ध्यान देबा पय पड़िबो चाइल्ड लेबर को हम प्रोटेक्शन करबा पय 1986 एक्ट को हमें सुरक्षा देबा पय. सो नेक्स्ट होची द जुवेनाइल जस्टिस पिला मानक पय जो बाल अपराधी न्यायालय आम देश अछि. बाल अपराधी न्यायालय ओडिया रे कहा जाय बा द जुवेनाइल कोर्ट ऑफ जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 हमर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट आम देश रे प्रणयन हेतला. आगुरु अवश्य हेतला किंतु संपूर्ण भाव रे एहा बेसी गुरुत्व सहकार भारत सरकार नेथिले 2000 रे. सो 1986 रे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट फास्ट इंप्लीमेंट हेतला आम देश रे जो बाल अपराधी मानकु सुरक्षा देबा पई. बाल अपराधी को कहीं सुरक्षा दिया जिवो ना सेमाने तांकर अगोचर रे तांकर हेतु बाहर से कर्म करिथांती तेनु तांक पई स्पेशल कोर्ट थाए. नॉर्मल बड़ लोक माने जोठी जाई के अपराध करी जोठी न्याय पाइथांती से कोर्ट रे सेमानकु अलाउ न थाए. तेनु बाल अपराधी बा जुवेनाइल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सेपरेट कोर्ट ऑफ जस्टिस स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन माध्यम तांको न्याय प्रदान करिथाय. सो दैट objectives of this present law to bring juvenile law in conformity with United Nations. जाति संघ को लिंक करी जाति संघर आईन को पर्यालोचना करा जाई आम देश रे जुवेनाइल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रणयन करा जाईछि. कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड. सेकेंडली टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव एंड अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रिइंटेग्रेशन. पिला माननकु थैथान करिबा सेमाननकु कोर्ट रे न्याय देई तांकु ठीक भाव रे ठीक जगह रे तांकु थैथान करिबा. थर्डली टू प्रेस्क्राइब द रोल ऑफ द स्टेट एज फैसिलिटेटर rather than door by involving voluntary organization and local bodies for the implementation of laws. Local bodies अछि एनजीओ माने अछंती जो माने सेमानक पई मध्य सहायता करिथांती. सेमानकु किभली ठीक भाव रे काहे कि से अपराध घटैला कोन पई से अपराध कला तेनु एनजीओ माने अछंती तांको मध्य से विषय रे बुझा सुझा मध्य करैथांती. एवं टू एनेबल इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द जुवेनाइल or the child, establishing juvenile justice board, child welfare committee and homes in each district
प्रति जिल्ला रे एगडा सब अछि मध्य चाइल्ड वेलफेयर कमिटी अछि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अछि एमाने तांक माध्यम रे सब विभिन्न प्रकार पिला मानकर जो बाल अपराधी करिथांती समस्या सॉल्व होइता सो अरेस्ट एंड बिल किभली अरेस्ट हेबे एवं ता पय बिल सब कोन अछि such a juvenile when apprehended by police shall immediately be handed over to the special juvenile police unit रे juvenile police unit separate अछि से माने सब पुलिस से मानको अरेस्ट कर परिबे नाही जुवेनाइल कोर्ट पुलिस से मानको अरेस्ट करिवो कारण उति स्पेशल केयर प्रोटेक्शन माध्यम रे से माने जो अपराध करछंती से मानको निया जाई थाए and designated police officer who shall immediately report the matter to the member of the board प्रत्येक जिल्ला रे गोटे गोटे बाल अपराधी बोर्ड अछि से बोर्ड को एमाने इन्फॉर्म करियो पुलिस जुवेनाइल पुलिस so the police officer should also inform the parent guardian of the juvenile and direct him to the present before the board where juvenile is to be presented तांकर ए जुवेनाइल डिपार्टमेंट कोन करिवो से बा कोर्ट बा पुलिस बा कमिटी से तार पेरेंट को इन्फॉर्म करिवो तम पिला अपराध करिछि सो प्रोसीजर फॉर नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की बोली पिला मान को निया जाई थाए जुवेनाइल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा ए चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स प्रति जिल्ला रे अछि लिस्ट 1 शैल बी वुमेन जो मेंबर थांती जने महिला थिबे एंड अदर चाइल्ड एक्सपर्ट मान सब थिबे तागरे any child in need of care and protection can be produced before the committee से committee आगरे से पिला मान को आनि के पहुंचा पे पड़िबो by any police officer or special juvenile police unit से committee आगरे ताको आनि के पहुंचा पे पड़िबो ता परे any public servant or child line आम जिल्ला रे केउंझर जिल्ला मध्ये अछि चाइल्ड लाइन अछि जो पिला माने बड़ा अपराधी करि थांती से चाइल्ड लाइन केयर रे से मान को छडा जाई था हला सो द कमिटी हैड द फाइनल से इन डिस्पोजिंग ऑफ द केस एज फॉर द नीड ऑफ द चाइल्ड आफ्टर एन इंक्वायरी इज हेल्ड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ्स 4 मास भीतर ता ऊपर इंक्वायरी करी कोट अपराध कला कोन कला इत्यादि ता परे द चाइल्ड करंट पळै जाउछि कोन करिवा so the child will again protected the child if he is abandoned neglect or otherwise may be ordered to be placed in children home or shelter home till suitable rehabilitation is found ओडा shelter home रे ताको रखा जिवो जे पर्यंत से थैथान न होइतिबो सेही जगह रे ताको रखा जिवो कमिटी माध्यम रे सो एडा सब होची विभिन्न प्रकार एक्ट विभिन्न समय रे प्रणयन करा जायछि देश रे किभली श्रृंखला रही परिबो नारी मानकर निर्यातना सुरक्षा निर्यातना रो सुरक्षा दे जाय परिबो इत्यादि इत्यादि सो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट तो याटा गुरुतर अपराध देश पय तो सेति पय हमको समस्त को सचेतन होबा पय पड़िबो सो नेक्स्ट होछि सोशल लेजिस्लेशन ऑन वुमेन महिला मानक पय कोन सोशल लेजिस्लेशन सब अछि दैट aspects are item also included in your block 4 syllabus block 4 रे या मध्ये include करा जायछि सो महिला मान होछि प्रकृत रे वास्तव रे से माने देशर उन्नयन मूलक अर्थनैतिक प्रगति एवं सामाजिक प्रगति एवं राजनीतिक प्रगति प्रत्येक क्षेत्र रे से मानकर पुरुष मानक भली इक्वल समस्त इक्वल शेयर अछि so both men and women must maintain equal status equal right hence the country will automatically grow economically politically socially the country will become advanced and hence women as human beings and citizens of this country they have human and legal rights to live with human dignity सेमानकर मध्य आत्मसम्मान अछि महिला मानकर सेमान मध्य डिग्निटी भावरे सेमानकर बंचिबार अधिकार अछि पुरुष मानक भली द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया had recognized
there are rights of equality and personal liberty and fundamental freedoms incorporated several provisions to promote the same. सब गुड़ा का संविधान प्रणयन करिछि and often violated by powerful elements in the society if they are exploited and abused, and their rights are often violated so that there will be a court of justice. So जदि सेमानंकर भायोलेशन करा जिवो महिला माननकु तांकर राइट्स तांकु एक्सप्लॉइटेशन करा जिवो ताल सेति पई कोर्ट न्यायालय मध्ये अछि. So safeguards of personal liberty of women. Separate places of detention should be provided for female suspects. जदि बा फीमेल महिला माने सस्पेक्ट थांती तांकु स्पेशल डिटेंशन करा जाय परिबो. अपमान धला बळी कोनसी जगह से मानकु करा जाय परिबो नाही. स्पेशल डिटेंशन करा जाय परिबो. स्पेशल केयर नै दिबो. So next होची female suspects should be interrogated only in the presence of a female police officer. जदि किछि अपराध महिला माने करले ताले महिला पुलिस तांकु ही केवल कंट्रोल करिवो. पुरुष पुलिस सेठी रहबा उचित नै. Every person who is arrested should be informed of the grounds of arrest and the right to apply for the bail. Bail पे apply करिवो बाध्य. The police should intimate the arrest to the nearest legal aid committee, and the committee should give immediate legal assistance to the arrested person. So legal aid ताकू आईनगत सहायता महिला मानकु मध्य दिया जाई था. Session judge should make supervised visit to police lock up periodically. जज माने मध्य महिला माने किछि असुविधा हला जे अरेस्ट हेतिबो जज माने सेशन जज तांकर विजिट करिवार अधिकार अछि. किछि प्रॉब्लम हला कोन हला on arrest the police should inform a relative or friend of the arrested person. पुलिस बाध्य हबो तांकर महिलार के रिलेटिव होंतु तांकु इन्फॉर्म करिवा पई हला. The crime of rape murder सब आम सोसाइटी रोची एगुडे सब जो माने सब फीमेल लर्नर्स अच्छा सेडा सब जानि थाओ जानिबा उचित. द क्राइम ऑफ रेप सेक्शन 375 आमर कॉन्स्टिट्यूशन कहूची ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी धारा 375 कहूची डिफाइन्स रेप बाबद रे कहूची 375 एक्ट अनुसार इंडियन पेनल कोड तकवाजा आईपीसी. According to this definition, rape is committed when a man has sexual intercourse with a man or with a woman. जेते बेले sexual intercourse करी थाए गोटे महिला सहित सेते बेले ताकू रेप बोली कहिबा as per the 375 इंडियन पेनल कोड अनुसार. मन रखता एटा 375 एक्ट आईपीसी धारा बा इंडियन पेनल कोड एक्ट against her will. So IPC 375 कोन करछि जने महिला जदी एग्री नथिबो तार इच्छा विरुद्ध रे जने सेक्सुअल अटैक करिछि. So against her will. सेकंड होछि without her consent. महिलार बिना मतामत रे जबरदस्त जदी ताकू सेक्सुअल हरासमेंट करिथिबो. Thirdly, with her consent when her consent has been obtained by putting her any person in whom she is interested. जो महिला तार इंटरेस्टेड इच्छा अनुसार से सेक्सुअल कार्यक्रम रे इन्वॉल्व थिबो ताल से क्षेत्र रे किछ असुविधा नाही. सो नेक्स्ट होची with her consent when he by deception makes her believe that he is her lawful husband. आईन संगत जड़े तार हजबैंड जदि थिबो से क्षेत्र रे किछ असुविधा नाही. So with her consent given on account of her mind and intoxication when he is incapable of understanding the consequence of her consent. जदि महिला जनक तार जहा बुझोइथिबो जने मेल जदि से किछि बुझी नथिबो ताकू सेक्सुअल हरासमेंट कला. सो से क्षेत्र रे आईपीसी धारा 375 लागू होबो. With her withdrawn her consent
when she is 16 years of age 16 वर्ष रु तळ पिलाटी ताल से क्षेत्र रे मध्य हरासमेंट बोली कुहा जिवो सो नेचर ऑफ द क्राइम ऑफ रेप को भलिया नेचर अछि क्राइम टा रेप इज नॉट ओनली ए क्राइम अगेंस्ट द पर्सन ऑफ वुमेन इट इज ए क्राइम अगेंस्ट द एंटायर कंट्री पूरा देश पय एटा इट डिस्ट्रॉयज द साइकोलॉजिकल ऑफ वुमेन एंड पुशेस हर इनटू डीप इमोशनल क्राइसिस एटा गोटा तार साइकोलॉजिकल इमोशनल क्राइसिस देखा जिवो तार जो मौलिक अधिकार अच्छी से सेथुरु महिला जनक वंचित हला तेनु करी ताकू आईपीसी धारा 375 अनुसार ताकू अरेस्ट करा जिवो से मेल को बुझि परलो सो इट इज ए क्राइम अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स and is also violative of the victim's most cherished of the fundamental rights, namely the right of life contained in Article 21. एटा हमारा Article 21 को मध्य violate करूची. The accused and sexual intercourse with the woman, Article 21 कौन कहूची? Accused had sexual intercourse with the woman. The man accused rape was the one who committed the offense. The accused had sexual intercourse with a girl below 16 years of age. ताधर मध्य सब अरेस्ट करा जिवो. The husband who is accused of rape had sexual intercourse with his wife below 15 years of age. जदि जने हस्बैंड मध्य 16 वर्ष रु तळकु मैरिज कला चाइल्ड मैरिज रे जदि से सेक्सुअल एक्टिविटी रे इन्वॉल्व रहला से मध्य अरेस्ट हो. जदि से मैरिज भी करी पुरुषटा जदि मैरिज करी बिलो 16 इयर्स गोटे झीटी से मध्य अरेस्ट हो. सो प्रोसीजर फॉर से बळे अछि तापर प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द विक्टिम्स कोन कोन सब प्रोसीजर सब अछि विक्टिम जो मन सब करूचंती क्राइम करूचंती पनिशमेंट फॉर रेप रे पनिशमेंट सब कोन अछि नॉर्मल पनिशमेंट फॉर रेप मिनिमम 7 to 10 इयर्स 7 रु 10 वर्ष कारादंड इम्प्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन मध्य अछि. सेकेंडली पनिशमेंट फॉर रेपिंग one's own wife who is not under 12 is 2 years imprisonment or fine both. Thirdly होछि कोन punishment shall be rigorous imprisonment for not less than 10 years. Imprisonment for life long मध्य प्लस फाइन जीवन थिबा पर्यंत मध्य से ताकू कारागार दंडित बा इम्प्रिजमेंट हेकि रहइबो बंदीशाला रे ता सहित फाइन मध्य दबा पय बाध्य. सो तापरे महिला मानकर कोन ना लॉ रिलेटिंग टू डाउरी ऑफेंस डाउरी सोशल लेजिस्लेशन ऑन वुमेन रे डाउरी रिलेटिंग टू डाउरी द कस्टम कहीं के हमें डाउरी प्रथा बहु पुरातन जुगरु ये डाउरी सिस्टम बा जौतुक प्रथा हम देश रे ए पर्यंत सुधा देखा जाउची. ए पर्यंत जो महिला मान को जो दिया जाउची डाउरी गोटा प्रेस्टीज भाव रे दिया जाउची. सो अनेक अंश रे डाउरी सचेतनता लोक माने डाउरी सचेतनता पर यथेष्ट जानिलेनी. द कस्टम कहीं की डाउरी दिया जाउची द कस्टम ऑफ डाउरी started with the giving of presents to the young woman entering upon marriage by her immediate family and relatives as an expression of love and affection. ताकू पिलाटी को झीटी को आमे बापा माँ भाई हैं बा घरे जति कि मेंबर अछन ताकू बहुत भलो पाउथिबारु सबुदिन पय जेतेबेल परिवार से गोटे अन्य अजणा घर को जाउची सेतेबेल ताकू बहुत भलो पाउथिबारु ताकू किछि कैपिट बा डाउरी देकी जौतुक देकी ताकू विदा करिथान. एटा होची एक्चुअली लव एंड अफेक्शन पय ता माने नुहे जे जबरदस्त मते डाउरी दिया जाऊ नले मु ताकू निर्यातना देबी हैला एटा गोटा लव एंड अफेक्शन बट इन कोर्स ऑफ टाइम समय अनुसार यह परिवर्तन है. कंपल्सरी डाउरी सिस्टम इट बिकम ए monstrous evil which involve the question of family prestige and social status. आमे आउरी वर्तमान समाज रे अछि हे होछि हमर फैमिली स्टेटस सोशल बिहेवियर सोशल स्टेटस आमे एते देई परुछु आमे एते हमर एते संपद अछि आमे झियो को एते देई परुछु मैरिज
during the time of marriage जहाँ फल तार नेगेटिव इंपैक्ट एंटायर सोसाइटी रे पड़ुछि सो परिवर्तन कराइतला मेक गिविंग और रिसीविंग डाउरी ए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एटा गोटा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस 1984 रे ताको परिवर्तन कराइ डाउरी एक्ट को तापरे अनदर अमेंडमेंट आल्सो हेल्ड ड्यूरिंग 1986 डाउरी एक्ट डिफाइंड डाउरी डेथ एंड मेड इट कंपल्सरी टू कंडक्ट पोस्टमार्टम ऑफ ए वुमन हु had committed suicide or died in suspicious circumstances within 7 years of our marriage तेणु दरकार पड़े ताकू पोस्टमार्टम करा जायकरी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रे ताकू पकई जाय पारे सो डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिविंग or agreed to be given either directly or indirectly by one party to a marriage to the other party to the marriage by the parents of either party or by any other persons of either party marriage so एगुडा सब डाउरी हिसाब रे हम ताकू कहिबा demanding dowry is punishable directly or indirectly the punishment is imprisonment for a maximum period of 6 months or maximum 2 years and a fine of 10,000 dowry जो माने सब डिमांड करि थांती वुमेन प्रोहिबिशन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन महिला माने आजिकली विभिन्न प्रकार इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट विभिन्न प्रकार क्षेत्र रे समान सब पब्लिश करा जाउची महिला मानकु सोसाइटी बा बिजनेस क्षेत्र रे समान सब अट्रैक्शन करा पे एडवर्टाइज करा जाउची महिला मानकर अंग शरीर को शो करी समाज रे मध्य ए सब बिजनेस क्षेत्र में मध्य व्यवहार करा जाउची तणु एगडा सब होची इंडिसेंट फॉर द सोसाइटी every woman has a dignity of her own as a person hence her personality body talents and beauty have to be appreciated and respected by all persons in the society समस्त द्वारा सम्मान दबा उचित तांकर गोटे डिग्निटी अछि तेणु करी in spite of her high status and dignity there is a growing tendency among the vested interest in the society and degenerating women by their indecent representation in publication, particularly in advertisements. The offense of indecent representation and was made punishable by the Indian Penal Code. However, the provisions of the code were not found effective enough to deal with all sorts of indecent representation of women. Mass media रे जो advertise होची इत्यादि बा विभिन्न प्रकार बैनर रे तयारी होची जो बिजनेस सेंटर मान करे एडवर्टाइजमेंट करूछन्ती एगडा सब होची तांकर डिग्निटी प्रति आंच आसुची तणु या प्रति मध्य इंडियन पेनल कोड अनुसार एक्ट अछि सो दिस एक्ट एम्स एट टू डिफाइन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ए जो एक्ट आईपीसी एक्ट अनुसार डिफाइन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन महिला मानक जदि इंडिसेंट भाव रे व्यवहार करा जायतिबो secondly to prohibit all advertisement publication etc which contains indecent representation of women in any form thirdly to prohibit selling distribution circulation of any book pamphlet etc containing indecent representation of women बहुत प्रकार pamphlet देखथिबो सब पेपर बही मानकर एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग सब
ये सब महिला मानकर चित्र सब लगी थाए इंडिसेंट चित्र गुड़िक तेणु एगुड़ा सब इंडियन पेनाल कोड अनुसार एक्ट अनुसार पनिशमेंट दि जाए जो मान करें सो पेनाल्टी हूँ कौन फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन द पनिशमेंट इज इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years 2 वर्ष पर्यंत अच्छी पनिशमेंट and up to 2000 rupees fine. For the second subsequent conviction, the imprisonment will be from 6 months to 5 years. 5 वर्ष पर्यंत मध्य जो माने इंडिसेंटली महिला मानकू व्यवहार करिथिबे विभिन्न प्रकार पैम्फलेट बा चित्र इत्यादि देखैकिरी तापर होछि हमर विभिन्न प्रकार हिंदू मैरिज पार्टी अछि तमर सिलेबस अनुसार हिंदू लॉ मैरिज एक्ट आदर अछि पार्टीज ऑफ हिंदू मैरिज सेरेमनीज तेणु एगुड़ा दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन सिलेबस मुस्लिम मैरिज लॉ अच्छी पर्सन्स गवर्न बाय द मुस्लिम लॉ इन इंडिया मैरिज कंसेप्ट एंड सेरेमनी एसेंशियल सेरेमनी ऑफ मुस्लिम मैरिज मैरिज पार्टीज इन मुस्लिम रूल्स पर्टेनिंग टू मुस्लिम मैरिज को गुड़िका सब आईन अच्छी मुस्लिम मैरिज मान करे तापर रूल्स as to minimum age in a मुस्लिम मैरिज इफेक्ट्स ऑफ वैलिड मैरिज एगुड़ा सब अच्छी ठीक से हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टियन मान मैरिज लॉ सब आम देश अच्छी संविधान अनुसार ऑथराइज पर्सन्स फ्रॉम फॉर मैरिज किए मैरिज करि परिबो नेक्स्ट होची प्रोहिबिटेड डिसएग्री और डिग्रीज ख्रिस्टियन कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस हला तापर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अच्छी 1961 मैटरनिटी बेनिफिट अच्छी extent and application maternity benefit period medical bonus nursing breaks eligibility जो मन सब चाकरी बाकरी करी थांती maternity benefit से मन सब प्रेग्नेंसी मन तांग सब दिया जाई थाए death during pregnancy and maternity benefit claim and payment of maternity benefit all these are the items or aspect included in your syllabus तापर अछि family court गोटा अछि परिवार कोर्ट अछि सो family court रे सब विभिन्न प्रकार एस्पेक्ट इंक्लूडेड हियर क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज स्पेशल जज आर अपॉइंटेड इन फैमिली कोर्ट जुरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट अप्रोच ऑफ द कोर्ट एगुडी सब तमरा सिलेबस रे इंक्लूड करा जाई छी सो लेट अस आई मार्क ए फुल स्टॉप इन माय टीचिंग टुडे सो टुमारो सो आउ जो मान सब रहिलो रजिस्ट्रेशन कर दियो पिला टिके अधिकार होचो किंतु रजिस्ट्रेशन कम देखा जाउची अधिका पिला अछंती किंतु रजिस्ट्रेशन कम अछि हेलो आउ को माने करी ना करी दियो आगे पहुंचबो जो माने ऑल आर इंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ अराइवल इन ऑनलाइन immediately they should register their name and registration number or roll number in message box संगे संगे सेडा सब रजिस्ट्रेशन कर दबो एवं ना को एंट्री करिवो तुम रेकर्ड भुक्त है तुम ऑनलाइन लिंक रे तुम क्लास रेगुलरली करूच रेकर्ड होके रोच ना सो आउ कौन कौन के चाहूच एनीबॉडी एल्स लर्नर्स सोशल बिहेवियर हाउ व्हाट यू वांट्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस सोसाइटी एंड डिफरेंट लेजिस्लेशन एंड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर ऑफ द पर्सनालिटी as appears in our society so introvert and extrovert kon introvert hochi confined in nature they having no social contact or relations but extrovert are open minded having large numbers of social contact sometimes the extrovert categories of personality people are aggressive in nature बेले बेले aggressive हेई थांती किंतु इंट्रोवर्ट कैरेक्टर पीपल लोक माने एग्रेसिव हे न थांती बिकॉज़ दे आर शाय इन नेचर दे आर कन्फाइंड विथ देमसेल्फ दे हैविंग नो सोशल कांटेक्ट से मानकर कोनोसी सामाजिक संपर्क नाही हला तो से माने एग्रेसिव इन नेचर नहंती सेठी मध्ये इंट्रोवर्ट कैरेक्टर लोक मानकर पर्सनालिटी लोक मानकर नेगेटिव अछि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी लोक मानकर मध्ये नेगेटिव अछि So I marked a full stop here in my teaching today.
Hello. Chandan. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Babita, thank you. To all learners, thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. To all learners, thank you. So Chandan. Hello, Chandan. Stop recording. Hello, Chandan. Hello, Chandan.